Welcome to Top Crew Aviation. This is Captain P.K. Done like how to check with time. Now we would learn how to take startup and pushback. All right. So you get simple question like obtain pushback, obtain startup, and you have to follow the procedure. So guys, as we all know, as Sabiha must be knowing this thing rather than anybody else. लाइक स्टार्टअप कॉल लेने से पहले स्टार्ट सिक्योरिटी चेक्स हो जाता है, पीओबी पता हो जाता है, देन ओनली वी टेक स्टार्टअप. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट सबीहा. नो ओके, तो मैं बता देता हूं कि स्टार्टअप कॉल जब कैप्टन लेते हैं एटीसी से, लाइक शैल वी स्टार्ट अवर इंजन और नॉट, पुशबैक का जो परमिशन लिया जाता है उससे पहले दे मेक श्योर कि जो सिक्योरिटी चेकअप है वो पूरा हो चुका है, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड और आपका जो एरो बेस एंड स्टेप लैडर्स हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं. सो these are the prerequisite which are necessary to complete before asking for startup and pushback. So guys, keep it in mind. In case if you get a question, obtain startup but your door is open, so you will not take a startup. You will say cancelling startup due door is open, will call you once doors are closed. Be careful guys. इस तरीके की थोड़ी बहुत सिचुएशन घुमा के रख दी जाती हैं इन कॉल्स में, but we will cover all of them. So number one, before asking for a startup, security checks for all persons should be carried out. So we would be using this SCC, short form of security check carried out. We assume this whenever we make call. Acha, one more important update guys, whenever you get any question in question paper, you assume कि इससे पहले की सारी formality हो चुकी हैं. Let's say if you got a question about taxi in your exam, it means ऐसा नहीं है कि आप शुरू से शुरू करोगे, पहले टाइम चेक करोगे, फिर स्टार्टअप लोगे, देन यू गो फॉर टैक्सी. यू शुड अज्यूम कि भाई स्टार्टअप वगैरह सब कुछ हो चुका है. सो यू मेक अ कॉल ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन. एक बच्चे ने ये गलती करी थी एग्जाम में, सो डोंट डू दैट गाइस. ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू आंसर व्हाटएवर यू आर आस्क्ड फॉर, दैट्स इट. You have to assume that previous formality has been done already. If lapsing security check, no startup guys. We cannot go for a startup in case your security check is being lapsed. कोई भी ऐसी चीज which I told you, 4-5 जो conditions होती हैं normal, doors close होने चाहिए, step ladder aero base हट जाना चाहिए, security check carried हो जाना चाहिए, then only we can go for a startup, otherwise we have to cancel that. Like you get questions like that, doors are open and you are ready to start engine, it means you cannot ask for the startup, but yes, you have to make a call. Delhi ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie will call you for startup once doors are closed. That's it, this is your answer. You need not to tell anything else. So you have to react accordingly as per the situation given in your question paper. इसमें अब आपको पूरी कॉल देने की जरूरत नहीं है इस चीज में. Is it clear guys? तो ये जयपुर पे कॉल बनाओ. आकाश, you are in Jaipur and doors are open and you are ready to start engine. जयपुर सर कॉल है. हाँ, कॉल साइन तो यूनिवर्सल रहेगा थ्रू आउट द क्लास. विक्टर टेंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली till the time we are not solving question paper. Jaipur Tower, Victor Tango Alpha Bravo Charlie will call you startup after doors are closed. Okay, all right. So guys, you know, हम engine, being a pilot, we cannot start engine without permission of ATC. So make sure we always take permission before starting engine. Now normal call क्या होती है guys? Again, whom are you calling? So your ATC जहां पर भी है,
who are you, your call sign, where are you. Now you must be on any stand, then you will declare your location, stand 10. ये stand पूरा लिखा हुआ है, but we will not use the full form. We would write only S, guys. Okay, so you should start practicing from now onwards the short forms. Stand 10, we assume till the time it is not declaring in question कि lapse हो रहा है security check, we assume security check carried out, person on board 120, info Bravo. ये 3 से 4 information आपको add करनी होती हैं, that you should keep it in your mind. One, आप where में आ जाएगा stand, then security check carried out, POB and info. Guys, ये 3 चीजें आपको include करनी होती हैं to make your startup call, normal startup call. So this is the normal procedure. Like let's say Delhi ground, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, इतना हो गया. Whom are you calling? Who are you? Where? Stand 10. Security check carried out now, and we will give 2 more information. POB 120. Info Bravo. So info, whatever info it is at that point of time, then you would ask now what do you want? Request startup. All right, guys. So this is how we make this startup call, and if everything is normal, ATC will respond you Victor Tango Alpha Bravo Charlie startup approved. Then you are going to repeat that again, startup approved Victor Tango Alpha Bravo Charlie. This is the end of this call. So ये हो गया normal. All right. In case doors are not closed और भी कोई problem है, marshals are showing thumb down. In that case, we would cancelling, abandoning, rejecting, कुछ भी term use कर सकते हैं, वो भी मैंने लिखे हुए हैं notes में. So you have to cancel your startup. Will call you for startup once जो problem जो भी है वो solve हो जाएगी. Is it clear? Does it make sense for everybody? All right. So you are in Mumbai and ready for a startup. आपको कोई भी रूट दिया हुआ होगा सबिहा, you have to make a call. You are ready for a startup. इस तरीके का question दिया हुआ है. It means I'm telling you like you have to give this normal call. Everybody, guys, if you get you are ready for a startup, it means you have to give the normal call. Write it down. No problem. We are not in hurry. First, I'm with everybody, guys. Write it down. Everybody, I'll ask from everybody. Whom are you calling? That would be your Mumbai ground. Who are you? Victor Tango Alpha Bravo Charlie. Where are you? Stand 10. Security check carried out. POB 120. Info जो भी दिया हुआ है Bravo, let's say, request startup over here. Now, guys, whenever we write POB, keep it in mind, अगर Airbus है, Boeing है, तो 120, 130 कुछ भी लिख सकते हो. Approximate लिखते हैं. There is ऐसा नहीं है कि नहीं कोई number हो. If it is a trainee flight, do remember 120 मत लिख देना. ट्रेनी फ्लाइट में only 02, एक ट्रेनर और एक ट्रेनी, उसमें 120 मत लिख देना, नहीं तो फिर एग्जामिनर बढ़िया से मजे ले लेगा तुम लोगों के. और जिस टाइप का भी एयरक्राफ्ट होता है छोटा बड़ा, सो यू मस्ट अवेयर, तो थोड़ा बहुत लाइक ब्लंडर नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट चलेगा. सो like Karthik, would you like to share what you have written when you are in Mumbai? Don't forget to subscribe and press the bell icon to get all upcoming videos. Yes, sir. Yes, please. Go ahead. Mumbai ground, Victor Tango Alpha Charlie, stand 10. Security check carry out. POB 120. Info Bravo request startup. इतना टाइम किसमें लग गया था? इन्फो की फुल फॉर्म दूंगे क्या? What happened, Karthik? Why did you take a long pause in between after POB 120? बताओगे मेरे को एक बारी?
क्या इशू था? The very first time. First. It's okay, no problem. So Victor Tango Alpha Bravo Charlie, startup approved. Now Startup approved. Victor Tango Alpha Charlie. clear है guys? Akash clear है? Writing. Sudeep, you there? Yes, sir. Yes, sir. दे दो एक कॉल मुंबई पे. Yes, sir. Okay. Go ahead. Bombay ground, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, Mhm. stand 06. Mhm. Security check carried out. Passenger on board 150. Mhm. Info Bravo, request startup. All right. So guys, are we all on the same page? It's clear. बट हमें किस चीज का ध्यान रखना है? एक तो आपका स्टैंड, दूसरा सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पीओबी और इन्फो. प्रकाश ठीक है, आगे बढ़े. Okay, sir. All right. Any question, guys, from anybody related to this startup and pushback? Sir, I have one doubt. Yes, go ahead. Sir, for pushback also we have to give security check carried out person. हाँ, सेम कॉल बनेगी और हो सकता है you may get a question all together startup and pushback. तो सब कुछ similar है. There is no difference between in terms of our exam startup and pushback. ठीक है? Sir, do we have to say frequency during startup or not? Yeah. Use frequency all the time. All right. Use frequency all the time. Normally in exam, we use this, but in practical life, we tune it. Because till the time you do not tune the correct frequency, you cannot talk to the ATC. So you have to use the frequency. You get marks separately for the frequency. So guys, whatever I have told you, the normal procedure, you have to follow that. So over here, like Delhi ground on 121.25, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, stand 10 and so on. So keep using frequency, be addicted to use frequency. This is a good habit. Any other question, guys? All right. So this is another type of question. You obtain DATIS at 1030 and info was echoed due to technical reason and you are not able to start engine at hold on, yes, you are able to start engine at 1115 Victor Tango Alpha Bravo Charlie and you are at Delhi, guys. Isme, what is the difference and what is the catch? Can anybody tell me? We have to change information from echo to foxtrot. All right, Gaurav, what do you understand? Time से change हो रहा है. Gaurav, can you? All right, you are there. Subhajit, Kunjan, कोई नहीं बोल रहा भाई. Yes, yes, प्रकाश को तो पता ही है. आकाश, tell me. सर ये डेटिस इंफॉर्मेशन हम लोग ले लिए मे बी बट इंजन मतलब स्टार्टअप करने में हम लोग टाइम ले लिए तो मतलब हो सकता है इंफॉर्मेशन Yes, चेंज हो guys. So I'm telling you, like info, keep this information, ATIS or DATIS information, keep changing every 30 minutes. And we know we always, mention info whenever we discuss or make a call about a startup and pushback. So that makes, that makes difference here. Because we were trying at 1030 till 1100 we can use echo, but because it has been crossed 1100 we have to change your info, so we would use info foxtrot in place of echo, guys. Sabiha, is it clear? Sir, I'm not getting about this info B, info E, and all. All right. Actually, all right, let me. Info is like Alpha, Bravo, Charlie. We
we have divided it like 0100 alpha, 0200 bravo. जो डेटिस इंफॉर्मेशन होती है, एटिस इंफॉर्मेशन के क्लास में आप शायद नहीं थे, जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है उसको क्या है एवरी 30 मिनट्स पे हम चेंज करते रहते हैं. Like right now at like in Jaipur, if DATIS is going on Bravo, so after 30 minutes it will be your Charlie. हर 30 मिनट्स में चेंज होता रहता है. So the collab that DATIS is known as info. उसको हम एक टर्म दे देते हैं so that we do not get confused कि previous DATIS और अभी का DATIS similar है और difference है. If it is Bravo, whatever I mentioned, तो हम I am on the right track. If it is Charlie, it means I have to check it again. तो वो 80s का आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा. Because that over here this info we have to change. आप simply अभी इतना समझ लो कि अगर किसी भी तरीके से if we are not able to start our engine within 30 minutes, we have to change this info. Whatever the letter is given, you have to take the next letter. If it is echo, you have to take foxtrot. That's it. Nothing more. No rocket science. Okay. आकाश क्लियर है? यस सर. तो अब क्या है, वही कॉल नॉर्मली है, वही दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली स्टैंड 10 सिक्योरिटी चेक कैरिड आउट, पर्सन ऑन बोर्ड 120 इन्फो फॉक्सट्रोट रिक्वेस्ट स्टार्टर. तो गाइस इस कॉल को भी बना लो आप लोग, ठीक है. एंड यू अज्यूम दैट यू आर इन मुंबई एंड अल्फा है यहाँ पर एको की जगह. सो लेट्स से you just write down and make a call. You are in Mumbai, situation same है, अभी 1030 हो रहा है and your info is Bravo. Now you have to make a call. Can anybody give me a call? Mumbai ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie on 121 decimal liner. Stand 10. Security check cleared. Person on board 120. Information Charlie. Request startup. All right. So Akash, would you like to try? यस सर. Guys, note down करो. प्रकाश तुम भी लिखो इस कॉल को, अभी जो मेरे को बोला है. Guys, note it down. Keep practicing क्योंकि वो बहुत जरूरी है. कैसे लिखते हैं? Yes, go ahead आकाश. Mumbai ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie on 121 decimal liner. Okay. No, first you have to give the like Mumbai ground on 121 decimal this is Victor Tango Alpha Bravo Charlie. This frequency पहले बोलनी होती है आपको. Disregard. Mumbai ground on 121 decimal liner Victor Tango Alpha Bravo Charlie stand 5 security check carried out. Correct sir? Sorry sir. Stand 05. You take 2 digits. Correction. Stand 05 security check carried out. Person on board 120. Info Foxtrot. Request startup. Victor Tango Alpha Bravo Charlie startup approved to Mumbai ground. Say again. Victor Tango Alpha Bravo Charlie startup approved Mumbai ground. Startup approved Victor Tango Alpha Bravo Charlie. All right. Sabiha, clear है? Yes, sir. All right, then let me know what you have written. Read it out for me. I have not written it, but I was like writing down this question and I was about to write the answer, but still I can make the call. Okay. Write it down, no issues. Take 1 more minute. We all are here. And this, you will get these notes, guys, whatever I'm dictating here. The similar notes you would be getting. So don't worry about that.
You just practice about calls. That's it. बाकी जो भी whatever you think better है, you can note it down. That's not a problem. सर जैसे आपने प्रकाश सर रेडियो चेक के टाइम सर बताए थे कि फ्रीक्वेंसी को अपने कॉल साइन के बाद बोलना है ऐसा करके जैसे बताया था क्या मैंने? हाँ सर और उस दिन मतलब आपके नोट्स में भी तो दिखा है अच्छा कोई नहीं उसको ऐसे ही करो लाइक एटीसी के बाद ही हम ट्यून करते हैं ना विद द एटीसी सो लाइक दिल्ली ग्राउंड ऑन 120 कर लो वैसे मैं भी कभी कभी वैसे बोल देता हूँ आई नो बट आई प्रेफर कि भाई एटीसी के बाद ही बोल दो और बहुत सारा नोट्स में भी सर क्वेश्चंस में भी देखे हैं कि कॉल साइन के बाद बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज बोल लो आगे पीछे कर लो वो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है उसके लिए देयर इज नो हार्म इन इट ठीक है ना बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर पेपर नॉर्मली वी वुड नेवर यूज दिस फ्रीक्वेंसी वो तो ट्यून करनी होती है प्रैक्टिकली कर लो उसको एज पर योर कंफर्ट आगे पीछे जब भी हो बट यूज इट आइदर आफ्टर एटीसी और आफ्टर कॉल साइन बट यूज द फ्रीक्वेंसी ओके सर सर ड्यूरिंग एग्जाम जैसे हम लोग से अगेन बोलते हैं मतलब कि एग्जामिनर जैसे हम लोग को कुछ रिप्लाई दिया तो हम लोगों ने कुछ हाफ सुना तो हम लोगों ने जैसे से अगेन बोला तो मतलब उसको फॉर्मेट हिसाब से जैसे बोलेंगे कि मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली से अगेन ऐसा बोलेंगे कि डायरेक्ट से अगेन बोल सकते हैं सी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बैड प्रैक्टिस आप लोगों को समझ में आना चाहिए सेकंड लाइक don't use this very much say again first write complete message okay if there is anything which is missing then you can use confirm flight level 100 then examiner will respond you if it is correct he will confirm flight level 100 if it is incorrect he would say correction flight level 120 so this is how you have to do it like say again क्या बहुत ज्यादा formal हो जाता है say again so एक like for once it is okay so better if you say like that confirm whatever it is then examiner will respond to you clear yes okay yes Sabiha so it's Mumbai ground, Victor Tango, Alpha Bravo Charlie, stand 10. 10-10. Stand 10. Yeah, there is security no check. digit. Okay, go ahead. Stand 10. Security check carried out. Passenger on board 120. Info Charlie. Request startup. Okay. Victor Tango Alpha Bravo Charlie startup approved. This is Mumbai ground. Startup approved. Victor Tango Alpha Bravo Charlie. आया थोड़ा सा feeling आई ना? So this is how we have to make it. लगता है हम बना लेंगे but कई सारी mistakes हो जाती हैं normally. So we have to practice by writing and transmitting. Now guys we do have priority cases. So like बहुत सारी भीड़ है we do have congestion of traffic on any airport but in case of VVIP we get priority startup foreign designatory on board we take priority startup search and rescue flight or any rescue flight gets priority in case human organ on board we take priority startup air ambulance को भी priority startup मिलता है so guys do remember if you like you are ready for a startup with foreign designatory on board all right so this is how you would get a question so in that case nothing else you just you will use the simple format then request priority startup due whatever reason all right कोई अब जैसे लेट्स से एक एग्जांपल नीचे जो बनाया है Delhi ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie again same stand 10 security check carried out POB 120
request priority startup due to human organ on board info Bravo. So whatever is the reason, mention it, or everything is same. So write down the question. Prime Minister Modi is on board and you are ready for startup. You are in Delhi. सर अगर कोई जल्दी निकलने के चक्कर में गलत अगर नहीं है ऑन बोर्ड फिर भी बोल दे तो नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे तो फिर बोल ही देते ना, मेरे जैसे तो बोल देते अगर कुछ होता नहीं तो। पेनल्टीज होती है, FIR लॉन्च हो जाएगी 420 की। और जल्दी जाना है इसलिए फिर आज सोच रहे हैं कि ये फिर वो सलाखों के पीछे 420 का मुकदमा लगा के ना अंदर ससुराल ले जाया जाएगा। देन यू हैव टू गो फॉर 6 months इम्प्रिजनमेंट। अब आप ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे, मोदी जी को भी बुरा लग जाएगा कि मैं तो हूं ही नहीं, ऐसे कैसे भाई। So these are certain categories, these are certain privileges for certain people only. Yes, Prakash, please make a call. Question बोला था मैंने आपको। Delhi ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie on 121 decimal liner, stand 10, security check cleared, person on board 15, request priority startup due VVIP on board, information Charlie. ठीक है, correct है। Kunzang, can you hear me? Sir? Yes, Kunzang, can you make a call for me? Kunzang आज कहाँ चला गया दोस्त, आवाज ही नहीं आ रही है उसको। Sudeep, you there? Yes, sir. All right, just make a call for me. I gave you the question. क्या हुआ? क्वेश्चन तो सबके लिए था, इनविटेशन थोड़ी था। Okay, sir. Yes, go ahead. Okay, sir. Delhi ground on 121 decimal liner, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, stand 08, security check carried out, person on board 150, request startup due to VVIP. Request priority startup. इसी की तो जंग लड़ रहे हैं, अदरवाइज हमें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत थी। Yes, make a correction and repeat your call again, Sudeep. Okay, sir. Delhi ground on 121 decimal liner, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, stand 08, security check carried out, person on board 150, request priority startup due to VVIP on board, info Charlie. Correct है, very good. Sabiha. Down Victor Tango Alpha Bravo Charlie, stand 10, security check carried out, passenger on board 05, requesting priority startup due to VVIP on board, info Bravo. ठीक है, क्लियर है गाइस, सभी को समझ में आ गया है। अब दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडीशंस व्हाटएवर इट कुड बी। ठीक है आकाश, एनी क्वेश्चन? सर I have a doubt, sir. यस सर, ये इन्फो हम लोग पहले यूज कर सकते हैं कि बाद में भी यूज कर सकते हैं सर? कर लो बाद में यूज। ओवरऑल आपको यू हैव टू इंक्लूड दीज 3 थिंग्स। अब जैसे अभी हम पोजीशन रिपोर्ट भी देंगे, द मैसेज इज टू पास द इंफॉर्मेशन एंड फॉलो द प्रोसीजर। आपको फॉर्मेट यूज करना है। आप whom are you calling, who are you, where are you में आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाएगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। दे जस्ट चेक एग्जामिनर कि इन्फो ब्रेवो, क्योंकि नॉर्मली हम लास्ट में ही यूज करते हैं, तो कीप इट इन लास्ट, कोई इशू नहीं है। है ना? तो अगर इन केस बाई चांस कोई भी चीज आप, लेट्स से यू फॉरगॉट टू मेंशन पर्सन ऑन बोर्ड initially, but somehow by ending the call you came to know you have forgotten,
you should not leave like that. You have to mention person on board 120. So it's okay, no problem. All right. Okay. But do not try to break the format very much. एक आध चीज आगे पीछे चल जाती है. In this case, because we are following the process, we are just adding request priority startup the human organ on board. Info Bravo आगे कर दो पीछे कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं. ठीक है. Now you get question like you are ready for startup. It means you have to give the आपकी कॉल ही देनी है, नॉर्मल, नथिंग रॉकेट साइंस. बट यस, ये थोड़ा सा अलग कॉल है which we would discuss. So yes, Prakash, give me a call. You are in Jaipur and question is you are ready for a startup. Jaipur Tower, Victor Tango Alpha Bravo Charlie on 123.1 stand 05, security check cleared, person on board 105, request startup information Bravo. Victor Tango Alpha Bravo Charlie, Delhi ground, your FIC and ADC number has expired. Will revise estimate time of departure. Will obtain fresh FIC and ADC. Call you for startup. Victor Tango Alpha Bravo Charlie. So guys, अगर ADC and FIC number expired हो गया है, all right, so you may get a question like you are ready for a startup, all right, and you are ready for a startup, your FIC and ADC number has, but your FIC and ADC number has expired. But in case if examiner is also giving you this kind of answer, you have to say will revise ETD, because now you have to revise your expected time of departure because that has been changed. You have to schedule it again. पहले आपको fresh FIC and ADC लेना पड़ेगा. So will revise ETD and obtain fresh FIC and ADC number. All right. Then once you have that, then you have to give the call again. What? Like a Delhi ground, fresh ATC number, ADC number Zulu 123, FIC number 213, request startup now. क्योंकि आप पहले ही आप उसको इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे, तो आप वापस से कॉल करोगे request startup now, then ATC will give you the startup approved, then you would again read back startup approved Victor Tango Alpha Bravo Charlie. इसमें किसी को कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, ये कॉल आगे भी बढ़ सकती है गाइस, आपको ये आगे बढ़ानी है. अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि नंबर हैज एक्सपायर्ड, now you have done your reaction, will revise ETD and obtain fresh FIC and ADC number. But yes, let's say if you get a question, you are ready for startup with fresh FIC and ADC number. All right. So what you will make a call, Delhi ground, this is Victor Tango Alpha Bravo Charlie with fresh FIC number Alpha 123 and ADC number Zulu 124, request startup now. क्योंकि पहले आपका कम्युनिकेशन हो चुका है ना, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने दे चुके हो, तो FIC ADC वाले में 2 स्टेप और कॉल के बढ़ जाएंगे. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इन केस दिस इज जस्ट अ क्लियरेंस नंबर होते हैं, एयर डिफेंस क्लियरेंस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन कंट्रोल के जो क्लियरेंसेस होते हैं, इनके एक नंबर होते हैं, वो टाइम टू टाइम एक्सपायर हो जाते हैं आपके, तो वो सिर्फ फ्रेश लेने हैं और यू हैव टू कॉल बैक अगेन. बस इन्फॉर्म कर देना है आपको कि वी ऑप्टेड कॉलिंग यू विद फ्रेश ये वो, नाउ यू जस्ट गिव द स्टार्टअप, डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस दैट टू. अब जैसे सी क्वेश्चन ही यही है. नाउ क्वेश्चन इज स्टार्टअप अप्रूव्ड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली. लेट्स से आपका कॉल साइन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसके बाद की कॉल क्या होगी?
confirm startup approved. Getting my point? This is your question. You just have to confirm Delhi ground, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, confirm startup approved. बोलेगा startup approved, Victor Tango Alpha Bravo Charlie. बस आपको confirmation देनी है. ये कॉल पूरी हो गई. आपको कुछ नहीं करना. No security check carried out, no POV, nothing. सिर्फ जहां से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसका आंसर दो और आगे बढ़ो. दैट्स इट. पहले क्या हुआ, वी नीड नॉट टू रिमेम्बर. अब नॉर्मली इन बिटवीन है ये स्टार्टअप अप्रूव विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली. यू जस्ट हैव टू कंफर्म दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली, कंफर्म स्टार्टअप अप्रूव्ड. ये वही वाली बात होगी आकाश वाली कि कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है. दिस इज हाउ यू हैव टू रिएक्ट. स्टार्टअप अप्रूव, नॉर्मली वी डू नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. हम सभी क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, यू आर रेडी फॉर स्टार्टअप, डोर बंद है, खुला हुआ है, वट एवर इट इज, बहुत सारी चीजें नहीं है, बट उसने आंसर ही दे दिया. सो यू मे गेट कंफ्यूज. सो कंफर्म इट. दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली, कंफर्म स्टार्टअप अप्रूव. वो उसको रीड बैक वो बोल दिया. फिर आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे गाइस कि रीड बैक करना है स्टार्टअप अप्रूव विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली. ये तो आपको पता ही था. यू आर कंफर्मिंग दिस. दिस इज नॉट क्लियरेंस नाउ. इट्स ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी क्लियरेंस. You are just confirming that. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get all upcoming videos. Is it clear now, Akash? Yes. अच्छा, winds की जब भी ATC will give you the information, no need to read back. Just say your call sign. Let's say I'm your ATC. I'm telling you, Victor Tango Alpha Bravo Charlie, winds 290 knots. तो वो रीड बैक करने की कभी जरूरत नहीं होती है. यू विल जस्ट से विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली. वो एक्नॉलेजमेंट हो गया कि हाँ भाई आपने सुन लिया है. सो दिस वाज विल्को एज वी सभी ने करा था. विल्को वी विल नेवर यूज व्हेन इट इज, या विल्को वी कैन यूज व्हेन इट इज नॉट अ क्लियरेंस. इफ इट इज अ क्लियरेंस we will never use Wilco. We have to read that back. Example, we clear climb to flight level 60, watch out traffic 5 miles 3 o'clock. So this is the information for you. You can say Wilco. है ना, ये कोई instruction नहीं है, ये कोई clearance नहीं है. This is a general information. In that case, pilot can use Wilco. Otherwise, whenever any clearance is there, we would never use Wilco. रॉजर दिमाग में से निकाल दो कि रॉजर तो ATC के लिए ही बना है, नॉट फॉर अस. when I say pilot, it means everybody who is going to appear in RTR exam. तुम लोग ऐसा मत सोचना कि हम तो AME वाले हैं, हमें तो बताया ही नहीं था, वो तो पायलट के लिए था. So don't do that. आकाश जी आगे बढ़ें. Yes. अब देखो वो कॉल आ गई, यही वाला. दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो चार्ली has number has expired, will revise ETD and obtain fresh FIC and ADC number. Victor Bravo Charlie. Now Delhi ground Victor Bravo Charlie, fresh FIC Bravo 204 ADC Zulu 127, request startup now. आ गया ना. तो इस तरीके से we will increase the communication. अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो डिसरिगार्ड का मैंने एग्जांपल भी शेयर किया था. योर को पायलट कॉल्स कंट्रोल फॉर स्टार्टअप, टेक एक्शन. कैसे करोगी सबिया? आपके को पायलट ने ATC गलत ATC को कॉल कर दिया फॉर स्टार्टअप. हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन इट? संध्या, कैन यू स्पीक? नो. All right. So yes, Prakash, क्या करेंगे? So Sabiha, like whenever, yes, Prakash, you tell me. Delhi control Victor Tango Alpha Bravo Charlie. Disregard startup will contact Delhi ground. इसमें हाँ, okay.
Just Anand, इसमें correction कर देना. You have mentioned Delhi ground. There should be Delhi control. Your co-pilot calls control उस वाले question. So guys, you will call control. Being a pilot in command, you will call control and disregard that, and will contact Delhi ground for a startup, because for a startup we do not give call to control. We ask it from ground. Sandhya, any questions so far? Any confusion? No, sir. All right. By your voice, I can understand you are in foundation. No, sir. Everyone is gone now. Okay, good to go. All right. So समझ में आया? Sabiha, Sudeep, Vijay, Karthik. Yes. Yes, sir. हाँ, जिसने ये जो Yes, sir. ये जो टर्म्स हमने कवर किए थे उस क्लास में ये बताया था. बट अगेन, लाइक इफ योर जूनियर कॉल्ड अ रॉन्ग ATC, being a senior, you have to inform, disregard whatever the person called, will contact the correct ATC for whatever purpose you are calling. Okay. Now you have obtained startup, but marshaller shows thumb down. अब in that case क्या होगा guys? We will cancel startup due. जैसे priority में due priority ली, because of due to human organ mode, यहाँ पर हो जाएगा Delhi ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie cancel startup due marshaller showing thumb down. कुछ तो गड़बड़ है, so we have to cancel the startup. In a similar way, अगर door close नहीं है तो वही सेम कॉल बनेगी. Delhi ground Victor Tango Alpha Bravo Charlie cancelling startup due to door open. Here you go, your checklist. Like, subscribe, and share. Thank you for watching.